On a cold morning in January 2018, four senior judges of India's Supreme Court mounted a revolt against their Chief Justice. Addressing a press conference, the dissident judges lamented the selective assignment of cases to preferred judges and the Chief Justice's recalcitrance to structure such unbridled discretion. Contemporaneously, Pakistan's Chief Justice had embarked on a mission to build dams and reform the healthcare system, notwithstanding the flood of litigation and the ailing justice system he had inherited. While the events in India ought to have led to revisiting the discretionary powers of the Chief Justice of Pakistan, C.J. Nisar did exactly that which had ruptured the Indian court. In May 2018, he summarily reconstituted a bench comprising Justice Isa after the latter raised questions regarding the contours of the court's suo motu jurisdiction. Expressing his views on the unwarranted reconstitution, Justice Shah, who was the third member of the same bench, warned that any effort to dampen an alternative viewpoint of a member on the bench would shake the foundations of a free and impartial justice system. While the retirement of C.J. Nisar closed an unfortunate chapter in our judicial history, the fissures which had first emerged during his tenure would only be accentuated. By the time of his retirement, the hybrid regime had become entrenched. Critical to the survival of any authoritarian regime is the suppression of all dissent, the dissemination of hypernationalist rhetoric, intimidation of the media, and the emasculation of the judiciary. Soon after his unlikely election as the leader of the free world, Donald Trump, for instance, responded to the Court of Appeal's decision to block the government's travel ban by declaring that the opinion of this so-called judge essentially takes law enforcement away from our country. Unsurprisingly, the authoritarian project foisted on us since 2017, too, attempted to undermine the custodians of the guardrails of our democracy. It may be time to structure the Chief Justice's powers. By May 2019, a malicious reference had been filed against Justice Isa based on the spurious allegation that he failed to disclose his family's properties. Selective leaks to the media, press conferences by members of the government, and the alleged doling out of funds to lawyers who supported the reference betrayed the regime's desire to subdue the judiciary. Those who refused to be collaborators were consigned to irrelevant benches and excluded from the hearing of politically consequential cases. By the time the Supreme Court decided the fate of the reference against Justice Isa, the chasm between its judges was palpable. Alluding to the discord between judges in his farewell speech, Justice Maqbool Bakar bemoaned the manner in which we have disagreed with each other recently, and the exclusion of judges from the hearing of sensitive cases due to the impartiality of their views. Writing for these pages in September 2022, this writer had suggested that it may be time to structure the Chief Justice's powers to constitute benches under Order 11 of the Supreme Court rules, so as to entail meaningful consultation with the two senior-most judges of the court, thus making the process more inclusive and transparent. The importance of structuring such powers may be conspicuous from the fact that since 2020, Justice Isa, the senior Prasine judge of the court, has been involved in less than 5 reported cases emanating from the court's original jurisdiction. Juxtaposed with Justice Isa, however, Justice Ijazul Ehsan was involved in more than 20 cases across the same period. While this is not to suggest that the inclusion of certain judges in the hearing of politically consequential cases is calculated to achieve specific outcomes, the exclusion of judges whose views have often differed with that of the Chief Justice raises concerns about the integrity of judicial decisions and the Chief Justice's ability to act as a fiduciary of the people. Unsurprisingly, the recalcitrance to regulating such powers has irreparably ruptured the court. While C.J. Bandial may not have chosen the circumstances in which he inherited the apex court, his legacy hinges on his ability to steer the Supreme Court from the treacherous waters it finds itself in. The road to reform begins with dialogue and understanding that the powers enjoyed by the Chief Justice are not personal to the individuals who momentarily hold such offices. With C.J. Bandial set to doff his robes in September this year, would he have the gumption and wherewithal to assuage such concerns and regulate the one-man show enjoyed by the office of the Chief Justice of Pakistan? Or will his successor be left to pick the ashes of a fractured court? The polis is falling apart. The writer is a lawyer.
Published in Dawn, April 3, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. 3 अप्रैल 2023। जनवरी 2018 में एक सर्द सुबह में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत कर दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नाराज जजों ने तरजीही जजों को मुकदमात की मुंतखब तफवीज़ और चीफ जस्टिस की जानिब से इस तरह की बेलगाम सवाबदीद को तश्कील देने की कोशिश पर अफसोस का इजहार किया। इसके बरक्स पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कानूनी चाराजोई के सैलाब और विरासत में मिलने वाले निज़ाम इंसाफ के बावजूद डेमो की तामीर और सेहत आमा के निज़ाम में इस्लाहात के मिशन का आगाज़ किया था। अगरचे भारत में पेश आने वाले वाक़यात के नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सवाबदीदी इख्तियारात पर नज़रसानी की जानी चाहिए थी, लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बिल्कुल वही किया जिसने भारतीय अदालत को हिलाकर रख दिया था। मई 2018 में उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल बेंच की तश्कील नो की थी, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत के अज खुद नोटिस के दायरा इख्तियार के खदोखाल के बारे में सवालात उठाए थे। इसी बेंच के तीसरे रुकन जस्टिस शाह ने गैर ज़रूरी तंजीमों पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मुतनब्बे किया कि बेंच में किसी रुकन के मुतबादिल नुक्ता नज़र को कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश आज़ाद और गैर जानिबदार इना निज़ाम इंसाफ की बुनियादों को हिला देगी। अगरचे चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट ने हमारी अदालती तारीख का एक अफसोसनाक बाब बंद कर दिया है, लेकिन उनके दौर में जो दरारें पहली बार सामने आई थीं वो मज़ीद बढ़ेंगी। इनकी रिटायरमेंट के वक्त तक हाइब्रिड हुकूमत सरायत कर चुकी थी। किसी भी आमिराना हुकूमत की बका के लिए तमाम इख्तिलाफ राय को दबाना, कौम परस्ती पर मबनी बयानबाजी फैलाना, मीडिया को डराना धमकाना और अदलिया को कमज़ोर करना इंतहाई अहम है। मिसाल के तौर पर आज़ाद दुनिया के रहनुमा के तौर पर अपने गैर मुतवक्के इंतखाब के फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत की सफरी पाबंदी को रोकने के अपील कोर्ट के फैसले का जवाब देते हुए ऐलान किया कि इस नाम निहाद जज की राय लाजमी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हमारे मुल्क से दूर ले जाती है। हैरत की बात यह है कि 2017 से हम पर मुसल्लत किए जाने वाले आमिराना मंसूबे ने भी हमारी जमहूरियत के मुहाफिजों को कमज़ोर करने की कोशिश की। अब वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तश्कील दिया जाए। मई 2019 तक जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इस झूठे इल्जाम की बुनियाद पर बदनीयती पर मबनी रेफरेंस दायर किया गया था कि वो अपने खानदान की जायदाद जाहिर करने में नाकाम रहे। मीडिया में सेलेक्टेड लेक्स, हुकूमती अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रेफरेंस की हिमायत करने वाले वकला को मुबैना तौर पर फंड से महरूम करने से हुकूमत की अदलिया को दबाने की ख्वाहिश के साथ गद्दारी हुई। जिन लोगों ने मुआविन बनने से इनकार किया उन्हें गैर मुतालिका बेंचों में भेज दिया गया और सियासी तौर पर नतीजा खेज मुकदमात की समात से खारिज कर दिया गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की किस्मत का फैसला किया, इस वक्त तक इसके जजों के दरमियान खलीज वाज़े हो चुकी थी। जस्टिस मकबूल बाकर ने अपनी अलविदाई तकरीर में जजों के दरमियान इख्तिलाफात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस तरह हमने हाल ही में एक दूसरे से इख्तिलाफ किया है और जजों को उनके ख्यालात की गैर जानिबदारी की वजह से हसास मुकदमात की समात से खारिज कर दिया गया है। सितंबर 2022 में इन सफ़हात के लिए लिखते हुए इस मुसन्निफ ने मशवरा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट रोज़ के ऑर्डर 11 के तहत बेंचों की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तश्कील देने का वक्त आ सकता है, ताकि अदालत के 2 सीनियर तरीन जजों के साथ बामानी मशावरत की जा सके। इस तरह इस अमल को ज़्यादा जामे और शफाफ बनाया जा सके। इस तरह के इख्तियारात की तश्कील की अहमियत इस हकीकत से वाज़े हो सकती है कि 2020 से अदालत के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा अदालत के असल दायरा इख्तियार से निकलने वाले 5 से कम रिपोर्ट शुदा मुकदमात में मुलव्वस रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अल एहसन इसी अरसे में 20 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्वस रहे। अगरचे इसका मतलब ये नहीं है कि सियासी तौर पर नतीजा खेज मुकदमात की समात में कुछ जजों को शामिल करने का मकसद मखसूस नताइज हासिल करना है, लेकिन इन जजों को खारिज करना जिनके ख्यालात अक्सर चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ होते हैं,
अदालती फैसलों की सालमियत और चीफ जस्टिस की अवाम के एतमाद के तौर पर काम करने की सलाहियत के बारे में खदशात पैदा करते हैं। हैरत की बात यह है कि इस तरह के इख्तियारात को रेगुलेट करने के फैसले ने अदालत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। अगरचे चीफ जस्टिस बिंदियाल ने उन हालात का इंतखाब नहीं किया जिनमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट विरासत में मिली थी, लेकिन उनकी विरासत का दारोमदार सुप्रीम कोर्ट को इस खतरनाक पानी से निकालने की उनकी अहलियत पर है। इस्लाहात का रास्ता मुकालमे और तफहीम से शुरू होता है कि चीफ जस्टिस को हासिल इख्तियारात उन अफराद के ज़ाती नहीं हैं जो आर्जी तौर पर ऐसे ओहदों पर फाइज रहते हैं। जब चीफ जस्टिस बिंदियाल रवां साल सितंबर में अपने लिबास पहनाएंगे तो क्या उनके पास इस तरह के खदशात को दूर करने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को मिलने वाले वन मैन शो को रेगुलेट करने का इख्तियार होगा? उनके जानशीन को टूटी फूटी अदालत की राख उठाने के लिए छोड़ दिया जाएगा? पुलिस टूट रही है। मजमून निगार एक वकील हैं। अखज़ शदा बतारीख 3 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.